Hey guys, so we are gonna solve again some new questions, and here are the questions given. Okay, so let's see. So in the first question, it is given that f is continuously differentiable function such that mod of f dash x is less than 1. Okay, it is explicitly written that mod of f dash x is less than 1, added in the close interval minus 2 comma 2. Okay, you have to find the value of f of 0. Now ये क्वेश्चन हम लोग को क्या क्या पता चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो लिख लेंगे क्या पता चल रहा है इधर. So it is given that f dash x is less than equals to 1, and it means the function cannot increase or decrease faster than the than slope 1. Okay, and hence this question becomes a classic example of MVT plus Lipschitz condition question. Okay, so this is a classic mean value theorem and Lipschitz condition question. Okay, now let's see what is given in the later part. So f of minus 2 and f of 2 equals to 5. Now we can say that by f of 2 minus f of minus 2, this is equals to what? 5 minus 1 equals to 4. And when I do this divide, and we know that 2 minus of minus 2 is equals to 4. We know both of this, ये दोनों हम लोग को पता है. So average slope इधर में क्या बनेगा? Average slope between two endpoints, between endpoints 2 and minus 2 is 4 by 4, which is equals to 1. And so by mean value theorem, there exists C belonging to, better to say, minus 2 comma 2, such that f of c, f dash c is equals to 1. Okay, so इतना तक हमें पता चल गया. ये हम लोग ने मीन वैल्यू थ्योरम से पता चल गया हमें. बट हमें तो ये भी ऑलरेडी पता ही है कि f dash x का mod is less than equals to 1 है. So hence derivative can never exceed 1. Okay, hence derivative can never exceed 1. Therefore, the only way average slope becomes 1, exact becomes 1, is f dash x is equals to 1 for all x belonging to minus 2 comma 2. Okay, सबके लिए जब 1 बच जाएगा तब ये चीज पॉसिबल है. ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को. मैंने मीन वैल्यू थ्योरम लगा के जस्ट बोल दिया था कि f dash c is always equals to 1, and therefore the only way average slope become 1 is क्योंकि average slope cannot ever exceed 1, so therefore average slope become 1 is f dash x is equals to 1 for all x belonging to minus 2 comma 2. Okay, now
अगर ये वाला पोर्शन को अब मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाला फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इट विल गिव मी fx equals to x plus c. ओके, नाउ f ऑफ -2 होगा क्या, -2 दिया हुआ है मेरे पास 1, तो इधर में अगर मैं f ऑफ -2 बैठा हूँ तो -2 plus c equals to 1 which implies c is equals to minus sorry c is equals to +3. ओके, एंड f ऑफ 2 दिया हुआ है मेरे पास 5, सो उधर से मुझको क्या मिल रहा है फिर से देख लो, 2 plus c equals to 5 which implies c is equals to 3. ओके, तो c equals to 3 इधर से मेरे पास दो बार आ गया एंड hence fx is equals to x plus 3. okay, and therefore f of 0 is equals to 0 plus 3 which is equals to 3. okay, is equals to 0 plus 3 which is equals to 3. So this is the answer here. okay, so conditions लगा के मैंने ये just fulfill कर दिया. okay, मुझको पता चल गया फंक्शन क्या ना हो कैसा होना चाहिए, इधर में से ये स्टेटमेंट मेन था. क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम से मेरे पास इतना तक आ गया था और ये चीज मेरे पास ऑलरेडी गिवन था और उधर से मुझको पता चल गया था कि डेरिवेटिव कभी भी एक्सीड नहीं करेगा 1 से, और द ओनली वे टू ensure that the average slope becomes 1. okay, only way to ensure that the average slope becomes exactly 1 is f dash x equals to 1. okay, so this is the way. So f of 0 is equals to 3. now चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाले दिन करेंगे. आज के लिए गुड बाय.